So in this video we are going to discuss the memory recalled questions, that is BFM, that which are asked in the June 2019, right? And some of the questions we are also going to discuss in 2000 December of the previous one, right? So this is the some questions which are asked commonly. इसमें हम ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसमें से मोस्टली जो क्वेश्चंस है आपका रिपीट होता है, मतलब पैटर्न विल बी repeated, right? So let's start this video. So some questions like Nostro accounts. What is Nostro account? Questions having very confusing definitions, so you need to have completely clarification regarding Nostro, Loro accounts, and some all the NRI related accounts, right? So NRO, NRI, so all these accounts you need to fully clarification, and this is every time they are asking these questions most commonly. So next, like one LC related questions. This is from module A. So questions to find advising bank. So in the LC we have already discussed and study an LC question to find negotiating bank, LC issuing bank, LC right confirming bank. Who is the confirming bank, issuing bank, negotiating bank? And in LC nothing is mentioned, but it should be considered which LC, right? So let me see, answer was irrevocable. So if nothing is mentioned, it should be considered. If in LC nothing, no related data has been given, अगर कुछ LC में आपको कुछ डाटा नहीं दिया होगा, that should be irrevocable, right? So LC में आपको एक sure shot question है, right, to find advancing bank, negotiating bank, issuing bank, confirming bank. So you can follow our the LC letter of credit topic. There we have given with examples we have discussed this LC, right? So this is very important from with respect to module A. As we have already discussed, in this short period of time you should focus module A and module C for more theoretical, and that will be your short questions, right? So you can easily cover it. So next one will be irrevocable. So see, that will, if nothing is mentioned, that will be irrevocable. अगर कुछ mention ही नहीं हुआ होगा, then it will be irrevocable. और एक case study आया था, one case study to find best possible rate out of the two bank rates for sending money abroad. Whether it is TT selling rate, TT buying rate will be applicable. एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें we need to find two banks rates for sending money abroad. और ये वाला जो है that will be TT selling और TT buying. TT buying, TT selling से आपको 5 to 6 mark questions आपको easily मिल जाएगा, right? So you can focus that part. That's very easy one. You can easily get the point. So case study one to find. Next one आया था to find the best possible rate out of the two bank rate for sending money from FCNR. Case study to find best possible rate out of two banks rates for sending money from FCNR deposit. Answer, none of them, as FCNR is in USD. FCNR can open in the USD, so that answer is something like none of this. So these are the FCNR account, मतलब NRE account related questions. So case study and find the best possible rate out of two banks, TT selling rate and TT buying rate. Currency buying selling rate will be applicable. So you can go through this TT buying, TT rate, TT selling, and bill buying, bill selling. That's very easy concept. You can relate these questions with the NRE accounts also. So some questions related to yield on bond and numerical type. So some question will be yield on the bonds. So this is the theoretical sense, and that will be numerical. So if you have the time and if you have your doubt, you have the clarity, we can mention is. If you have the clarity in this topic, then again we can go through this, or have the some just basic idea, just go forward, right? So next will be something how to calculate leverage ratio calculation, right? So let me show you what is leverage rate calculation. So here we can see what is leverage rate calculation. This is leverage rate ratio. The leverage ratio is any one of the several financial measurements that look at how much capital comes in form of debts
or loans or assess stability of a company to meet its financial obligation. So this leverage ratio से हमें ये पता चलेगा कि कितना कैपिटल आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ लोन और डेप्ट में, and it will also assess the ability of a company to meet its financial obligation. So एक कंपनी का जितना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होगा, जितना उनका लायबिलिटी रहेगा, उसको उसका क्या एबिलिटी है सबको फुलफिल करने के लिए, that will decided by the leverage ratio, right? So let me give the formula for this. So here is the leverage ratio formula. How to calculate total company debt divided by shareholders equity, right? So here total company debt, count of the company total shares equity multiplying the number of outstanding company shares by the company stock, divide the total debt by the total equity. So this is the formula for the leverage ratio, right? So what is the good leverage figure? 0.5 or less is the ideal for the leverage ratio. In other words, no more than the half of the company's assets should be financed by the debt. In reality, many investors tolerate significantly higher ratios. In other words, a debt ratio of 0.5 will necessarily mean a debt to equity ratio of 1. आपका जो debt equity ratio रहता है that will be simplified 1, but अपना leverage ratio should be 0.5, right? So next और एक हमारा आया था, that is TT buying rate, to find the best possible rate out of the two. What is TT buying rate and bill buying, bill selling rates, right? So next in stocks इसकी वजह से purpose of cap liquidity, coverage ratio, right? So next in notional transit period, that is 20 NTP कितना है हमारा, that is 25 days, right? So questions on POA, power of attorney, can send the remittance from NRE account, and question, can power of attorney can send the remittance from NRE account? That will be the answer, no. So what is American style and European option style? One question related to modified durations. So this is modified durations, and from this is आपका all time एक question आता है modified durations. So let me show you how to calculate this modified duration. So this is the modified durations formula, macular duration divided by y plus yield to maturity divided by n, that is number of. You can easily get it. So here let me show you what is modified durations. So here modified durations is a formula that expresses that measurable changes in the value of a security in response to a change in interest rate. So we'll discuss this more further in the upcoming. So let me discuss this formula first. So macular durations 1 plus YTM divided by n, macular durations weighted average term to maturity of the cash flow from a bond, weighted average term, and YT yield to maturity, and n होगा n number of coupon periods per year, right? So this is very important one. So this modified durations formula, you just remember this, and इसका जो है अमेरिकन यूरोपियन, this is also important. So मॉड्यूल ए जैसे कि हमने बोले थे थियोरिटिकल है, कुछ मतलब जो न्यूमेरिकल्स है बहुत इजी रहता है, so you can easily get it. So in this short period, if you have the time, you can go through more numericals, and if you are trying to complete in short period of time, then you should focus more with accuracy for the theoretical, as we have mentioned in the previous videos. So let me see the next one. So और जो आया है next one है, that's like FIMDA, features of FIMDA, and notice money period. notice money time period का क्या है, एक क्वेश्चन आया था जिसमें है 2 to 14 days, right? Difference between CLN and CDS, and और एक क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो. What is economic equity ratio? One questions, let me show you what is economic equity ratio. So here we can see the basic definitions for the economic equity ratio. The ratio of shareholders funds to the asset. Ratio of shareholders fund जो एक रेशियो है, फर्स्ट है shareholders fund to the total asset, measures the shift in the ratio of owned fund to the total. जो आपका ओन्ड मतलब अपना जो फंड है कैपिटल इम्पोज किया गया है वो वाला फंड टू विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल फंड, उसका जो रेशियो है उसको शिफ्ट होता है, मतलब उसके हिसाब से वो जो टोटल फंड के हिसाब से आपका ओन फंड का वेरिएशन क्या है
उसको डिफाइन करता है. सो दैट द फैक्ट असेसेस द sustenance capacity of the bank, the sustainability of the bank, how the bank will sustain, right? So that will depend. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका जो इक्विटी रेशियो अगर लो रहेगा मीन्स द कंपनी प्राइमरली यूज्ड डेब्ट टू एक्वायर एसेट्स, मतलब वो क्या कर रहा है ना, एक्वायर जो एसेट खरीद रहा है वो क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेके ही एसेट ले रहा है, विच इज वाइडली व्यूड एज ए इंडिकेटर फॉर ग्रेटर फाइनेंशियल रिस्क. अगर कोई अपना एसेट को क्रिएट करते जा रहा है बाय टेकिंग मोर डेब्ट देन दैट विल एज समथिंग इम्प्लाइज लाइक फाइनेंशियल रिस्क. So equity ratio with higher value generally indicates that a company effectively funded its asset requirement with a minimal amount of debt. जिसका equity ratio जिसका high है, right? So उस केस में हम ये बोल कर सकते हैं कि जो हम ये बोल सकते हैं, सी हमारा ये है ओन फंड डिवाइड बाई टोटल फंड. अगर आपका कोई वन है, राइट, सो मोर देन वन है, मतलब आपका ओन फंड जो है उसके हिसाब से हाई है कौन सा, टोटल फंड. सो उसमें वो क्या कर रहा है, जो कंपनी वो अपना फंड को ही डाल के ज़्यादा से कम, ही इज़ टेकिंग वेरी लेस डेब्ट टू क्रिएट द एसेट्स. सो इन दैट केस वी कैन से दैट हैज़ लेस फाइनेंशियल रिस्क, राइट. सो उसके बाद जो क्वेश्चन आया था यहाँ पर हम देख सकते हैं, और लाइक व्हाट इज एफेक्ट्स कौन किया था, सम ऑन मनी, आउट मनी एंड इन द मनी, एट द मनी, आउट मनी एंड इन द मनी. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारा जो क्विज ग्रुप है हमने वहाँ पर इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, यू कैन रेफर दैट ऑल्सो. सो फॉलो द डिस्क्रिप्शंस, द लिंक विल बी गिवन. सो नेक्स्ट वन है कि इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो जो है ऑलरेडी हो गया. ऑन एफेक्ट्स क्लियरिंग, हु डेवलप्ड द एफेक्ट्स क्लियरिंग? एफेक्ट्स क्लियरिंग आरबीआई, सीसीआईएल, सेबी. आंसर सीसीआईएल. कौन क्या है एफेक्ट्स क्लियरिंग? दैट इज सीसीआईएल. फीचर्स ऑफ सीवीएलओ that can refer, see theoretical questions as we have discussed, some more theoretical and C module will cover, so you can easily clear the BFM, right? So repo rate क्या है? What is repo rate? Risk pricing related to questions to find the practical use of it out of the options. और कुछ का स्टडी था, that is change of migration. A जो रेटिंग से A, triple A, B rate company as compared to the previous years. Question 3 questions were there. So ये आपका मस्ट क्वेश्चन है. अगर आप with respect to numerical देखेंगे इससे आपको मैक्सिमम 1, 2, 3, 4 मार्क का इजीली मिल जाएगा. सो रोल ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रोल ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स इन मैनेजमेंट ऑफ रिस्क. क्वेश्चन वाज हु मेक्स द पॉलिसीज, रिस्क लिमिट्स एंड सिस्टम फॉर द रिस्क मैनेजमेंट. कौन पॉलिसी बनाता है एंड ऑल. इन द अबव क्वेश्चंस हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम. इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये सब जब रूल्स है, पॉलिसीज है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है. एंड वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग द कोरेस्पोंडिंग बैंकिंग, दैट इज पेनल्टी फॉर नॉट क्रेडिटिंग द अमाउंट क्लेम्ड बाय द कोरेस्पोंडिंग बैंक, राइट. सो हम एक क्वेश्चन जो आया था हमारा, सो केस रिलेटेड टू एफसी. एनआरआई गेट्स 20,000 USD dollar, want to get it credited in his NRE account. 4 options was given. Correct can be done by CDF. What is CDF? Currency denomination form, something like that. So it can be done. अगर वो 20,000 है उसको कर सकता है like with the form by taking CDF. Currency, C for currency declaration फॉर्म. आप करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म लेके उसको ये वाला करा सकते हैं, राइट. सो नेक्स्ट है कैपिटल चार्ज फॉर फॉरेन एक्सचेंज. व्हाट आर द कैपिटल चार्ज? केस स्टडी ऑन एनआई नेट इंटरेस्ट रेट टू फाइंड परसेंटेज चेंज इन एनआई when interest rate declines by 1% in the given interest rates. Case study on NI to find the percentage when interest declines 0.05% and वही जिसमें आपका declines हुआ है 1% assets in the given. Questions to find capital fund. एक कैपिटल फंड के बेसिस पे आपको हुआ है. नेक्स्ट आपका जो है ये वाला लाइक CRR and risk weighted assets of bank A and bank B. And questions to make comparison between bank A and B related to their asset liability management and key principles supervisor reviews principle. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका 2 to 3 मार्क्स कवर हो जाता है. की प्रिंसिपल्स इन सुपरवाइजिंग रिव्यू प्रोसेस ऑफ बेसल 3. सो कल ऑप्शंस
पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन आपका जो मॉड्यूल सी से है. Question to find whether the holder of call option will utilize the deal or not. And call option, put option, case study to find whether the holder of the put option will have profit or loss by making the deal. So impact of CRR, जो हमारा CR है उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा. सो ये कुछ था क्वेश्चंस जो 2019 में आया था. सो हम और कुछ प्रीवियस ईयर का देख लेते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियरिटी. लाइक कुछ FCNR अकाउंट कवर हुआ था, NRE अकाउंट, बकेट CV, लिक्विड एसेट्स, व्हाट इज SNR अकाउंट, balance item, off balance, on balance item and off balance item, treasury products, transferring pricing, LM, many questions. Then special non-residence SNR account, special, what is the full form of SNR? Special non-resident rupee accounts, part of SLR, SWIFT, stop loss trigger, profit trigger, cash accounts, forward contract, OTC. अगर आप जो अभी मतलब कहते हो स्टॉक्स वगैरह में ट्रेडिंग करते होंगे आपको ये पता होगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर एंड प्रॉफिट ट्रिगर. देन टायर 1 कैपिटल, टायर 1 ये वाला जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आपको टायर 1 टायर 2 में क्या किया जाता है आप उसको बस करिए, इसमें से आपको 1-2 मार्क आ जाएगा. लिक्विडिटी रिस्क, एक्सटेंडेड लोन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच टाइप ऑफ लोन, रिस्क वेसल्स, मेनी क्वेश्चंस, मतलब वैसे से आपको और कुछ क्वेश्चंस मिल जाएगा. राइट. अगर आपको 100 आउट ऑफ समथिंग 80-70 रखना है तो आप मैक्सिमम कवर करिए. अगर आपको बस 50 कवर करना है प्लस करके देन यू नीड टू फोकस सम मोर पार्ट्स. राइट. एंड इफ यू हैव द टाइम यू शुड ट्राई फॉर टू कवर सम मोर एंड मोर पार्ट्स विथ वन बाय वन. डोंट मिक्स एवरीथिंग. राइट. सो हियर बैंकिंग बुक्स, ट्रेडिंग बुक के हिसाब से एक डायमंड डॉलर अकाउंट एक क्वेश्चन आया था. राइट. बेसिक वैल्यू पॉइंट्स, ए में अप्रोच एस्टिमेटेड ऑपरेशनल रिस्क कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइन VAR and stress testing, body term money, then SLR effect. If the SLR effect will decrease, what will be the effect? सो और एक क्वेश्चन आया था UCPDC, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या रूल्स है, कितने टाइम मिलता है, दैट विल वेरी इंपॉर्टेंट. LCR विथ करेंसी, कैस्टोडी LCR, आइडेंटिफिकेशन टाइप ऑफ द LC फ्रॉम द ऑप्शन. इफ नथिंग हैज बीन गिवन देन इट विल बी इरिवोकेबल. राइट. Case study on the derivative deal, function of ECGC, risk management control steps, YTM, market to market, meaning of mark to market. What do you mean by mark to market? Right. So और कुछ questions are that will be some case studies and artificial loss, case study on corresponding LC and ripple effect and TT buying, like that. Right. सो इसमें से जो क्वेश्चंस था ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक ALM बकेट्स, बॉन्ड कैलकुलेशंस एंड न्यूमेरिकल सम चैप्टर्स, केस स्टडी NRE, NRO, FCNR एंड फॉरेक्स. इसमें से आपका फॉरेक्स से कुछ क्वेश्चन आ गया था. राइट. मैक्सिमम आपका जो है A एंड C मॉडल आप उसको कवर करिए, आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मार्क मिल जाएगा. राइट. ये हमने अच्छे अभी डिस्कस करा है कि जैसे कि आपका DLR, SLA, LC के ऊपर टाइम बकेट, मैकली मॉडिफाइड ड्यूरेशन, इसके ऊपर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. So और कुछ क्वेश्चन है which are very important. Numericals from TT buying, as we have mentioned, something CRR from stock ratio, EPCC export packing credit, one direct question, all when scoring about its definitions, and numerical case study from the yield and risk weight assets. Right. So और page 60 जो आपका stock ratio है, definitions and ratio formula, and pre-shipment post shipment finance, इसके बारे में you just need to have some idea. If you have more clarity then attempt this, otherwise have some and then guess and go. Right. And but if you have the time try to clear this because there will be most questions from this definitely. Stock approach, ratios, volatile liabilities, assets, deposits, loans, etc. has been given. Read the roles of the various institutions, you just need to cover this. ECGC formation year was given, we have to identify the institutions. Right.
सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हमने देख सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो just try to focus the theoretical parts if you have the less time, right? And if you have more time, you have to cover the numerical parts also, and that's be fixed. Some parts are more fixed. You can refer the other videos where we have the mention the more focusing parts of the in this BFM, right? So till that point, keep studying, and thanks for watching our videos. Thank you.